ऑलराइट, सो देखो क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने जो मैथमेटिकली पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि द रेजिस्टेंस and temperature are linked to each other in a certain way, which is R is equal to R naught 1 plus alpha T, right? Where our T is the increase in temperature, T is the change in temperature, change in temperature, and this is the resistance at the, due to the increase in the temperature by an amount T. तो हमने वो आर टी, और हमने क्योंकि आर नॉट लिखा है तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर ज़ीरो था, फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, तो हमारा ज़ीरो पे जो है आर नॉट है रेजिस्टेंस, और टी इंक्रीज होने के बाद हमारा रेजिस्टेंस है आर टी. So and alpha is also understood, well understood. We are referring to nothing but the coefficient of resistance. ठीक है, how the temperature impacts the resistance, that is clear to us. So ये तो maths हो गई इसकी. But what about the situation where the reasoning is, why does the resistance of a metal increase with the, so this part is mathematical, you can memorize, you can solve some numericals, but पंगा ये है इसके अंदर कि हम we are, you know asking for a conceptual reasoning. So the conceptual reasoning is, if you look into a metal, okay, so metal is made up of metal, right? So these are the metal, for example it could be any metal, aluminium, copper, iron, all are good conductors of electricity. So this could be a two marker or reasoning assertion in JEE और योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. तो मैं मेटल का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक तरह से मेटेलिक स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल चारों तरफ, इट्स वेरी होमोजीनियस, all the atoms are identical because we're dealing with an element. Okay, now what happens is, these are the metallic ions, metallic ions. इसका मतलब ये है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे अलग हो गए हैं. दीज आर माई इलेक्ट्रॉन्स. अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बैटरी का कनेक्शन लगाया, राइट? आई कनेक्ट अ बैटरी टू दिस, आई कनेक्ट अ बैटरी. Okay, this is some inside, all of this is happening inside a wire. Now the moment the electrons get a electric field due to the battery, and there is a potential difference between the 2 points. For example, the real situation is कि ये ऐसे है मेटल, लेकिन हम तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेटल के अंदर जाके देख रहे हैं, तो अंदर हमें नज़र आता है ये इलेक्ट्रॉन से, जैसे ही हमें अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं. दीज आर जनरली दोज लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल्स दैट टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, एज सुन एज यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, these start running inside the metal. On an average what they get is a drift velocity, right? अब अभी आपका टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, सो यू आर एट अ वेरी लो टेम्परेचर करंटली, एंड योर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इज T1. तो आपने देखा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग थ्रू द मेटल, बट दे आर कोलाइडिंग विद द मेटल आयन. सो दीज आर द आयंस ऑफ द मेटल, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है. तो वी ड्रिफ्ट आप देखते हो electrons की, when they travel there is a v drift also, and then you say okay we are able to see the v drift. electrons बड़ी आसानी से मेटल के थ्रू पास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो वो अपना ये है electrons, they are colliding with the ions, but they are easily able to pass through. For example, this electron collides and then it again starts running, then it collides again with some metal ion. This is what is happening at a normal temperature. So whatever we are studying is at a normal temperature. Now somebody said, why the resistance goes up
तो पहली बात तो ये है कि जो इस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है काफ़ी हाई है. हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है योर करंट इज़ वेरी नाइस, एंड देन यू कैन से कि जो मेटल आयंस हैं, ये जो मेटल के पॉजिटिव आयंस हैं, दे आर ऑफरिंग लो रेजिस्टेंस बिकॉज द metal ions are allowing the drift velocity to pass through them easily. Why are they allowing this easy passage of electrons? Because when there is some room temperature, the vibration of the positive ion is very low. So the positive ion of the metal, which could be magnesium or whatever you want to call it, is positive ion vibration is low. तो ये जो मेटल आयन होते हैं अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट भी करते हैं, रखे थोड़ा सा ऊपर नीचे गए तो वो कम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को स्पेस अच्छी मिलती है निकलने के लिए. बट कंपेयर दिस टू अनदर सिचुएशन. ओके, नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ अगेन अ मेटेलिक आयन स्ट्रक्चर which is pretty uniform inside, but this time my temperature is going to increase drastically. अब मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ मैं, थोड़ा बढ़ा दिया, मान लो मैंने 50 डिग्री बढ़ा दिया अपना टेम्परेचर. ओके, और वही मेटल है, सेम मेटल है जो हमने ऊपर बनाया था, वही मेरे मेटेलिक आयंस हैं. दीज आर माई मेटेलिक आयंस एंड दीज आर माई सेम metals. मैं ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ so that you have more clarity, and let me use some other color to show you the electrons. So these are my electrons, these are my electrons which have come only from the metal ion, and पीछे वो positive charge छोड़ गए हैं. जैसे कि वो हो जाता है अगर सोडियम में से एक चार्ज इलेक्ट्रॉन हटा दें, it becomes sodium plus, right? तो this structure I am drawing is actually a 3D structure. पीछे भी ions हैं, सब तरफ आयन है, भी electrons हैं, और आपने अब इसके ऊपर सेम बैटरी कनेक्ट कर दी जो आपने ऊपर कनेक्ट करी है. दिस टाइम व्हाट यू विल नोटिस, इफ यू कनेक्ट एन एमीटर हेयर, और आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू कनेक्ट एन एमीटर हेयर. ओके, यू कनेक्ट एन एमीटर, you will find the current which is coming in this ammeter to be pretty low, right? I'm connecting an ammeter here, you had an ammeter here also. यहाँ पे current ज़्यादा आया था क्योंकि the drift velocity was very high, the electrons were passing smoothly and the resistance was low. But the moment the temperature goes up, the vibration of this ion increases. It starts vibrating up and down, in fact in all the directions, which means when the electron tries to pass through the metal smoothly, it cannot, because every time it tries to pass there is an ion which is vibrating up and down and the collision happens. So if you increase the temperature, if you increase the temperature, okay, the positive ions of the metal vibrate intensely. काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाती है क्योंकि वो भी तो टेम्परेचर से इम्पैक्ट होते हैं. Since the vibration has become very intense, the passage of electron through the ionic lattice of the metal becomes difficult. So your V drift is now facing lot of resistance क्योंकि वो बार बार कोलाइड कर रहा है. पहले कोलाइड नहीं कर रहा था इस सिचुएशन में, थोड़ा थोड़ा कोलिजन था लेकिन स्मूथली निकल जाता था इलेक्ट्रॉन से बाहर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर. लेकिन यहाँ पे बाहर निकलने से पहले इतने कोलिजन हो जाते हैं दैट the passage is not smooth at all, and therefore your V drift is actually low क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद आपकी टक्कर हो रही है. And if your V drift goes down, and which means your electrons are facing lot of resistance, we can say that due to increase in temperature, the ions of the metals are vibrating so intensely that they don't allow the electrons to pass through them very easily. Therefore your V drift goes down, and therefore you say the resistance has increased. This is like resisting ना, आप रोक ही तो रहे हो दूसरे सामने वाले को, अड़चन डाल रहे हो ना उसके, उसको आगे नहीं जाने दे रहे आराम से. Tell me if there is a doubt in your mind that कि ये समझ में नहीं आया. I think it's pretty straightforward if you understand, right? But if you look into this equation,
This equation just tells you what? Maths. अच्छा ये कोई टेम्परेचर था, मान लो T1 था, तो आप इसको R1 लिख दोगे, और ये इस T2 माइनस T1 कर दोगे, डेल्टा T लिख दोगे, अल्फा आपको पता होगा मेटल का, यू नो, एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. सो दिस वाज डेफिनेटली the equation that explains the variables involved. But this equation does not go to explain anything to do with why this behavior, why the metals exhibit this behavior. So I hope this made sense. If you have a doubt in your mind, please feel free to ask me. Anything that comes to your mind. आपके दिमाग में कोई भी point आता है जो आप समझना चाहते हो, feel free to do that. Otherwise, I'm assuming you have understood. But you can ask your doubt anytime you want to, later also. Yes, sir. ठीक है?